Look at the scale, the texture, the brilliance of it. I'll come to all of that, the technicality, the performance, the emotion behind it. But first, the stock question. Why Veer Savarkar? Why not Veer Savarkar? In the 80s, there was a movie made on Gandhiji. Subsequently, there have been movies made on Sardar Patel, two of them. And I myself have done Rang Rasya, I played on Raja Ravi Verma, I did Charles Sobraj, Sarabjit. So, why not Savarkar? I think that's the big question. I think movies are a great medium of reaching out to people, even internationally. America has done that very well, even recently with Oppenheimer. They have, but in our country, we are shooting down our own icons, which is unbelievable. So my question to everybody is, why not a movie on Savarkar? Brilliantly put. Not just your transformation in terms of physicality, but the emotional landscape of it. You have lived the character. And here is a story that tells us who the man was. Can you please tell us who the man was not? What he was brave. And what he wasn't was a coward. What is the first word comes to anybody's mind when you talk about Savarkar in today's dispensation? First word. Maafi Veer. He was not a Maafi Veer. There were petitions, bail pleas they were called, and everybody had a right into court. They would know how they address the court, and the language is very respectful, though you might not mean it. And there were many, many people who wrote that. If you're sentenced to 50 years of life in Kalapani in a 7x11 cell, you would not just rest there and think of it as a resort for the next 50 years of your life. You will use everything, Sam, Dam, Danda, Bhed, to get out of there. He felt that he had to contribute a lot to India's freedom struggle, culturally, socially, and he wanted to get out. दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते. Crisp and sharp, blunt and sharp at the same time. Please tell me why the man, the Veer that he was, his philosophy, his ideology, why he continues to be relevant even in today's day and time. Well, he's very relevant today because he looked at India as a civilization. He looked at India as a cultural unit, as Akhand Bharat, as he used to say. And India's position in the world today has grown not only because of diplomacy, but because we are armed to the teeth. It's only being armed that there can be peace. Otherwise, people will keep bullying you. And I think the India as a country today is armed and it's respected in the world, and there is peace because we are armed. And that was Mr. Savarkar's philosophy, and his philosophy on Hindutva was all encompassing कि देश धर्म से ऊपर होता है और सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी यहाँ रहते हैं वो इसको जो भी इसको अपने पूर्वजों की ज़मीन मतलब अपने पितृभू पूर्वजों की ज़मीन मातृभूमि यहाँ की संस्कृति त्योहार खान पान को अपना मानते हैं वो हिंदू हैं चाहे वो किसी भी धर्म जात या समाज के क्यों ना हो. So I think his idea of uniting India as a society, as a country, was the most unifying. And I think that's what we are following today. We are trying to unify the country where we put country before religion. This man has internalized the character to another level, to another degree. And with that, I call on the stage the producers of the film. Anand Pandit sir, please join us.
Sandeep Singh sir, please come along. Also, हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है एंड आप सबको बधाई। मेरे दो सवाल है रणदीप जी से। पहला सवाल है, जैसा कि शायद हमने ट्रेलर में देखा, कुछ ऐसी बात की गई थी कि यदि सावरकर जी होते और आर्म्स स्ट्रगल के थ्रू क्या हमें हमारी आज़ादी पहले मिल सकती थी? क्या ये संभव था? ये बिल्कुल संभव था, क्योंकि 1900s के पहले दशक में एक मूवमेंट शुरू हो चुका था। एक तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी। सावरकर जी वीर सावरकर वॉज एट द हेल्म ऑफ इट। लोकमान्य तिलक जी का उन पे हाथ था और वो प्लान कर रहे थे। उन्होंने गन्स इंडिया स्मगल की थी, बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल किए थे और सबको चिट्ठी लिखी थी कि वो बगावत के लिए तैयार हो जाएं, प्रिंसली स्टेट्स को, फौजियों को। तो 1912 तक उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इनको इतने कम तादाद में अंग्रेज़ हैं हमारे देश में कि अगर हमने इनको मारना शुरू किया तो इनको समझ में नहीं आएगा और ये डर के भाग जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली Lokmanya Tilak died, Veer Savarkar was sent to prison, and that momentum of that movement was lost. And then, of course, the non-violent movement started, which was more conducive to the British because it was not direct confrontation and it was negotiations that went on for many, many, many years. And ultimately they left because they lost too much money in the First World War. And they had to leave. But that's the story. We could have got our freedom earlier. मेरा जो दूसरा सवाल है, आई वुड से इट इज़ मोर इन लाइन विद द करंट मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़। और जब हम आज विश्व में देखते हैं दो रीजन्स में युद्ध हो रहा है, और जब मैं इसराइल और पैलेस्टीन की बात करूं, एक देयर इज़ अ थियोरी ऑफ इक्विलिब्रियम यूज्ड इन डिफेंस सर्कल्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जहाँ पे आपने भी जिक्र किया दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी आर्म्ड। लेकिन ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इतने सदियों से चल के आ रही है। और हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमास के लिए उन्होंने कहा कि आप अहिंसा छोड़ के, वायलेंस छोड़ के आप इंडिया की तरह फॉलो करें, गांधीवाद बनिए। तो इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरी पिक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब आप सशस्त्र होंगे तभी आप पीस टेबल पे बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको बुली ही किया जाएगा। और जब दोनों साइड इक्वली आर्म्ड होती हैं तब जाके पीस होती है, ना कि एक साइड अहिंसा को फॉलो करे या दूसरी साइड हिंसा को। उससे कभी पीस नहीं होगी, उससे ऑक्यूपेशन होगी। जय हिंद सर, थैंक यू फॉर द ट्रेलर इवेंट। सर मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जो आपने जो सावरकर का जो कैरेक्टर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप बताना चाहेंगे सर? बहुत लंबा सवाल है दोस्त, इसको बहुत लंबा आंसर है। एक्चुअली सवाल तो आपका छोटा ही था, पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि हर एक इंसान अपने सर्कमस्टांसेस का एक नतीजा होता है, वो कैसे होते हैं। So what I tried to do as an actor was explore the circumstances that made Veer Savarkar who he was, his ideology, his thought process. And what I felt was that he was a man of a giant intellect, a man of resilience, a man of great smartness. And he believed in साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। और मेरे हिसाब से उनकी कहानी लोगों तक जो नहीं पहुँच पाई वो एक ट्रेजेडी है, और मेरे ख्याल से उनको भी ये बहुत अपने जीवन में भी बहुत लगा कि उनको अपना ड्यू नहीं मिला। Hi, this is Sohail. On the right,